नमस्ते दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है मेरी चैनल पर जिसका नाम है डिक्शनरी गर्ल। एंड मैं आज 25 जुलाई 2022 के जेईई मेंस के कुछ क्वेश्चंस में सॉल्व करने वाली हूँ। बेसिकली ये वीडियो जो है वो प्रॉब्लम वॉक थ्रू वाला वीडियो है जिसमें आपको इन क्वेश्चंस के स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस आपके साथ में शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है। इसमें लिखा है a proton and a neutron are passed through the respective potential differences such that finally the ratio of their de Broglie wavelengths, that is lambda p is to d, is 1:2. If v represents I think potential difference होना चाहिए, acceleration is I think the typing mistake here. Potential difference, then vp is to vd is equal to how much? दोस्तों हम इसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए हम इसका सोल्यूशन। दोस्तों हम सॉल्व कर रहे हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, और इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमें actually the wavelength of a particle, it can be represented as h upon mv, जिसमें h is equivalent to lambda is equal to h on under root 2 mk। ये दोस्तों ये एक्सप्रेशन है जो कि आपको कंसेप्ट वीडियो से पता चल सकता है। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी को हम पोटेंशियल से रिप्लेस करेंगे। हमारा ये अंडर रूट 2 mv हो गया। बट अगर हमें स्पेसिफिकली फॉर प्रोटॉन, if you want to write something like this for proton, then that would be lambda p is equal to h upon under root 2 mp qp into vp रहेगा। और सिमिलरली जो लैम्डा डी है वो h अपॉन अंडर रूट 2 md qd vd रहेगा। अभी यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है। हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को वी क्यू से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसका रेशियो लेंगे। से फॉर एग्जांपल दिस इज इक्वल, this is 1 and say this is 2. I'm going to do 1 divided by 2. This is 1 upon 2 is what I'm going to do. This is lambda p upon lambda d, which is equal to h upon 2 into, I should write it probably in the next line. Okay, this is going to be, this is equivalent to h upon under root 2 mp qp into vp into, this is going to be 2 md v 2 vd into qd अपॉन h होगा यहाँ पर। और h अगर हमारा कैंसिल हो रहा है और जो इक्वल वैल्यूज है वो अगर हम कैंसिल कर दें, 2 कैंसिल हो गया। ये रहेगा md vd qd। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक्सप्रेशन है यहाँ पर। बट हमें ऐसा बताया है क्वेश्चन में, अगर हम क्वेश्चन देखें तो लेट मी स्टार्ट स्प्लिट स्क्रीन एंड शो टू यू, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें क्वेश्चन में बताया है, सी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उनका लाइक मास ऑफ अ न्यूट्रॉन विल बी 2 times the mass of a proton here. Because of that this will be equal to, हम यहाँ पर in place of md we can put it as 2mp. This is 2mp vd
into QD upon MP QP VP हो गया. So ये सारे terms cancel हो जाएंगे like except other than yes जैसे QP and QD same है, MP same है, and what we remain with is under root 2 into VD upon VP, which is equal to lambda P upon lambda D. So ये हमारा equation है जो कि है equation 3. बट अगर हम वापस अगर क्वेश्चन देखते हैं, if we check out the question again, so let's say it's here. So see, lambda p upon d we are already given, that is 1 upon root 2, जो कि अगर वापस we will be writing down. So that is 1 upon under root 2 is equals to under root 2 into under root vt upon vp. So that is 1 upon 2 is equal to under root vd upon vp. So basically we want vd upon vp, so that would be 1 upon 4 equals to VD upon VP रहेगा. So this is our answer to this question. Let's check the options. अगर हमें option में कुछ मिल रहा है, then let's just check it. ठीक है, okay, I cannot see that. Okay. Fine. ठीक है दोस्तों, so here it is. हमारा option रहेगा. Oops, हमें option में I think this answer is not given, but VP upon VD would be 4:1. ठीक है, so the answer is given. हमने उल्टा ratio लिया है, ठीक है, so 4:1 is our answer. Fine. Now we'll be moving towards the next question, which is related to the amplitude modulated wave. दोस्तों मैं आपसे दो requests करना चाहती हूँ कि before attempting such questions, I would suggest कि you should go through the concepts once, and also you should keep a paper and pen with you so that you can scribble it with me. So दोस्तों, in case of, I'll read the question. In case of the amplitude modulated wave, the maximum and the minimum amplitude of the wave is 6 volt and 2 volt respectively. The modulation index is. तो हमें modulation index इसमें ढूंढना है. तो दोस्तों हम इसे कैसे करेंगे? Let's begin. Okay. Okay, so this is our question number 2. So in question number 2, let's attempt this. So we have to find out the modulation index, that is mu is equals to question mark. हमको इसमें I'll just write down the given detail for my own understanding. So this is A max is equal to 6 volts and A mean is equal to 2 volts, जो कि हमने लिखा है. Now, modulation index के लिए it is mu is equals to A max minus A mean upon A max plus A mean रहेगा. तो इसमें this is equivalent to 6 minus 2 upon 6 plus 2. So that is mu. So 6 minus 2 is 4 and 6 plus 2 is going to be 8. And cancellation, okay, it's 1 upon 2. So that's going to be 0.5. So 0.5 is our answer. तो दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शंस में ये नंबर है या नहीं. So yes, option A is the correct answer, as we can see clearly. I'm highlighting it so we can see that. So option 5 is the correct answer here. ठीक है. अभी next one हमें दिया गया है यहाँ पर U is equals to 240 centimeters and V is equals to 12 centimeters. So sharp and focused image is formed on the screen when glass slab is of refractive index 1.5, thickness is 10 centimeter between the lens and the screen, then the distance by which a screen should be moved to obtain the sharp image. So we need to find the distance. We have thickness, we have refractive index of the glass slab, and we have image distance and object distance. So we need to find the distance by which the screen should be moved to get the sharp image. So ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं इस
इसका solution. So दोस्तों इसमें हम करेंगे ठीक है. So this is our question 3 that we are trying to solve here. So I'll just write down the details that are given to us. Like I'm writing 10 centimeters, and refractive index that is given to us is 1.5, and इसका दोस्तों कोई unit नहीं होता. So shift, we just want to find out the shift. So shift is equivalent to T into 1 minus 1 upon mu. So mu we already have, and we also have the thickness. So 1 minus 1 upon 1.5 is given to us. So that is 10 into 0.5 upon 15. So दोस्तों I hope आपके पास calculator है, and from this we will be able to find out the value of the value of the shift that is taking place in this given case. That's going to be 10 upon 3. So let's check whether that's given to us in the options. So here we go. So 10 upon 3, all right. So we need to find out on the calculator what is 10 upon 3. So that's going to be 3.33. And here we are given near about answer. So that is 3.2 centimeter. That should be the answer according to our calculations. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. दोस्तों इसमें हमें पेपर में ऑप्शंस नहीं दिए गए थे, सो मैंने भी इसमें ऑप्शंस नहीं लिखे हैं. ठीक है, सो वी आर गिवन सॉरी, लेट्स रीड द क्वेश्चन. ठीक है, सो वी आर गिवन अ सेल. सो एक सेल का ईएमएफ दिया है, तो दैट इज 1.2 वोल्ट इन द पोटेंशियोमीटर. इससे पहले भी दोस्तों कुछ वीडियोस हैं जिसमें मैंने पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस सॉल्व करे हैं. सो पोटेंशियोमीटर अगेंस्ट द लेंथ 72 सेंटीमीटर्स, और दूसरा सेल है जिसका ईएमएफ है 1.8 वोल्ट, सॉरी, एंड जिसको हम बैलेंस कर पा रहे हैं पोटेंशियोमीटर में कोई दूसरी लेंथ पर, तो हमें डिफरेंस इन द लेंथ फाइंड आउट करना है. सो 72 माइनस L2 होना चाहिए, जो हम फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, और इसको हम करेंगे सॉल्व. सो फोर्थ क्वेश्चन में हमको करना है कि यस, ठीक है दोस्तों. सो फॉर पोटेंशियोमीटर ईएमएफ जो है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट into the length. So यहाँ पर for cell 1 अगर हम एक जो हमारा जो फर्स्ट सेल है उसके लिए अगर देखें, so that is 1.2 is equals to x into 72 हो गया. So this is first equation. ठीक है, so that is our first equation. Now let's try for the cell 2. So cell 2. So for cell 2 we have 1.8 into, which is equal to we don't know the value of x here, and we don't know the value of L2 as well. So this is equation 2. So we will take the ratio of 1 and 2. Okay, so 1 divided by 2. So that would be 1.2 upon 1.8, which is equal to x into 72 upon x into L2. So अगर हम इसको देखें, then that is 12 upon 18 equals to L2 72 upon L2. So L2 is something like this, and so when we do calculations we get L2 is 108 centimeters. So now we already have L1, which is 72 centimeters. We want to find out the difference in length if we see the question. So that is here equal to L2 minus L1. So that is going to be 108 minus 72. So we need calci for that. So 108 minus 72 is going to be 36 centimeters. So दोस्तों ये हमारा आंसर है for this specific question. इसके options तो हमें नहीं दिए हैं, but I think this is the
करेक्ट आंसर। दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमको बताया है कि रेशियो ऑफ एफिशिएंसीज फॉर द कार्नो इंजन्स। ठीक, सो रेशियो ऑफ एफिशिएंसीज फॉर द कार्नो इंजन्स ए एंड बी, और हमें टेम्परेचर्स दिए हैं जो कि मैं जॉट डाउन कर लूंगी अपनी स्क्रिबलिंग बोर्ड पर, so that we can convert that into Kelvin and we can put it right away into the formula of efficiency. So दो efficiencies find करेंगे इसमें, that is eta A and eta B, and दोनों का हम ratio ले लेंगे इसमें. So let's begin. So इसमें हम आगे बढ़ेंगे and we will see what is to be done. ठीक है, दोस्तों मैं इसमें स्केल का फीचर यूज कर रही हूँ, एंड पता नहीं, आई फील द स्केल फीचर इन दिस नोट्स ऐप इन iOS रियली इंटरेस्टिंग, सो यस। ठीक है, सो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था? दिस वाज आवर फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, सो इसमें आई जस्ट राइट डाउन टेम्परेचर की वैल्यूज। सो दोस्तों T1 इज इक्वल टू 447 डिग्री सेल्सियस, इसको हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। सो 447 प्लस 273 रहेगा, जो कि हो जाएगा 720 केल्विन। एंड दोस्तों अभी मैं हर एक स्टेप में आपको नहीं दिखाऊंगी about addition of 273, but we have to understand that it is addition to 273, so that is equivalent to 420 Kelvin here. Yeah, so we'll just find out eta A. So that is 1 minus T2 on dV. That is 1 minus 420 upon 720, जो कि है 1 minus 420 upon 720, जो कि है 0.5833, जो कि मिलेगा हमें 0.4166, जो कि है हमारा eta A. सो सेम प्रोसेस से हमें eta B भी फाइंड करना है, जस्ट सेम प्रोसेस, that is 0.7377, and then we'll be taking the ratio, as we have to find out the ratio of efficiencies. So जिसकी हेल्प से we'll be finding out eta A upon eta B, which is equal to 0.4166 upon 0.7377, जिसका आंसर हमें मिलेगा 0.56. सो हेंस दोस्तों दिस इज आवर आंसर। तो चलिए दोस्तों हम चेक करते हैं कि हमें सेम आंसर इज इट गिवन टू अस इन द ऑप्शंस और नॉट। ओके, इसके ऑप्शंस नहीं है, सो बट देन वी हैव क्लियरली कैलकुलेटेड दिस एंड द आंसर इज गोइंग टू बी 0.56। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। सो इसमें हमें दिया है 200 ग्राम ऑफ बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द ब्लॉक, एंड मैंने इसमें डायग्राम भी अटैच किया है, सो हम देख सकते हैं। सो दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज वी हैव टू फाइंड डेल्टा के हियर। सो दोस्तों इसमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे। ठीक है, सो चलिए दोस्तों हम इसे सॉल्व करते हैं हम। Okay, so this is our last question. That is the sixth question in the video that we are going to solve. So इसमें हमें first of all PI, that is initial momentum, we will find out, which is MIVI. So initially जब bullet fire हो रहा था तब उसका mass था 200 grams. So that is 0.2 kg. So यहाँ पर मैंने 0.2 kg लिखा हुआ है, and velocity is 10. So this is 2 kilogram meter per second होगा। और अभी हम करते हैं PF, the bullet gets embedded in the box, so that's why that's going to be m bullet plus m block into V. So bullet's mass is 0.2 grams, block का mass है 9.8 kilograms, 0.2 kilograms, sorry, and voltage is, I mean not voltage, but the velocity is, let's say V, so that's 10 V.
But then as per the law of conservation of momentum, okay, so I'll just write down as per the law of conservation of momentum. So that would be 10v is equals to, actually that is pi equals to pf. So 10v is equal to 2. So v is equal to 1 upon 5. So that is equal to 2.2 meter per second. So हमें change in kinetic energy is what we want. So that is K1 minus K2, that is loss in kinetic energy. So K1 is the half mi vi square minus half mf vf square रहेगा, जो कि बनेगा half into 10.2 square minus half into 0.2 10 का square. So when we calculate this, we actually get sorry. अभी यहाँ पर मैंने उल्टी values लिखी है, so it should be like this. ठीक है, because this is the initial, this is pi. अरे sorry, this is pi. Yes, so this is going to be pi and this is going to be pf. ठीक है, so pi is going to be 10 minus, sorry, I'm really sorry, this is not pi but this is ki. So this is ki and this is kf. So 10 minus 0.2 is what we will get and the answer is going to be 9.8 joules. So दोस्तों ये हमारा आंसर है for this specific problem. So जैसे जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इस वीडियो में 6 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस किए हैं और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया. आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली. अगर आपको पसंद आया तो लाइक, share और सब्सक्राइब करना ना भूलें. And I'll see you in the next video with some few new questions. And yeah, see you till then. Goodbye.